Assalamu alaikum and welcome back to Jazz Biz Buzz. As promised, we are bringing you another industry today, and we are going to be engaging in conversation with Mr. Saqib Saleem from MCB Arif Habib, and we are going to talk about mutual funds and investments in Pakistan. Assalamu alaikum ji, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। नॉट गुड। Good. साकिब साहब थोड़ा सा बताइए अपना बैकग्राउंड, आप कहाँ से आपने अपना करियर शुरू किया, आपकी प्रोफेशनल जर्नी कहाँ से कहाँ चली और यहाँ तक कैसे पहुँची? So basically, by I'm a chartered accountant by profession. So I started off since I'm a chartered accountant. So I started off as working in finance and audit in general. But over the period, I always, love to take new challenges and learning new things. All that. So basically, मेरी कोशिश हमेशा ही रहती थी कि whenever new things come to me, new roles come to me, I generally embrace that and try to work hard, try to learn more so that I can have that, sort of things in me. फिर वो जनरली उसमें होता इस तरह से है कि आप जब चीज़ों को नया-नया अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, लेते हैं, तो आपकी जो करियर ग्रोथ है, वो उस तरह से हो जाती है। सो आई स्टार्टेड ऑफ एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज़ अ फाइनेंस प्रोफेशनल एंड टुडे आई एम हेडिंग अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इकोनॉमी हमारी ऐसी है नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सेविंग्स की तरफ जिनका रुझान हो। सो द क्लास डिफरेंसेस, कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर सकते हैं और उनकी बहुत एक हैंडफुल सी अमाउंट है, एंड देन देयर इज़ अ लार्जर पॉपुलेशन जो सेविंग्स का कॉन्सेप्ट उनका यही है कि आखिर के महीने में जो पैसे बच गए बस वो सेव कर लें। तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें कि हाउ डू यू केटर टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ योर मार्केट? देखिए, व्हाट आई बिलीव, हमारा अगर आप इफ यू लुक एट द नंबर्स, सो इन पाकिस्तान our saving rate is somewhere around 12 to 13%. As compared to the region, we are very low. So for example, in India, that similar rate is 26%. uh, for your audience, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं आसान श्योर श्योर, जबान में, इसका एब्सोल्युटली मतलब क्या है। एब्सोल्युटली। सो फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया 100 रुपए कमाता है और उसमें से 26 रुपए सेव करता है, पाकिस्तान अगर 100 रुपए कमाता है उसमें से 12 रुपए सेव करता है। इसका मतलब ये हुआ, अब उस सेविंग की इंपॉर्टेंस क्या है। जो 12 रुपए सेव पाकिस्तान में हो रहे हैं और 26 रुपए सेव इंडिया में हो रहे हैं, ये सेविंग्स में जाते हैं, सेविंग्स के बाद इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के बाद उससे इंडस्ट्री लगती है और फिर उससे इकोनॉमिक साइकिल चलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और उस एम्प्लॉयमेंट से फिर अगेन एक इनकम क्रिएट होती है और उसमें से फिर सेविंग क्रिएट होती है। सो इट्स अ साइकिल। सो जिस मुल्क में जितनी ज़्यादा सेविंग्स होती है, उस मुल्क में उसकी इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ उतनी अच्छी होती है। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान में हमारे पास हमारे जो इकोनॉमिक नंबर्स हमको बताते हैं, वो बताते हैं कोई 12% की सेविंग है हमारी। व्हाट आई बिलीव, हमारी सेविंग 12% की नहीं है। हमारी सेविंग उससे कहीं ज़्यादा की है। द डिफरेंस इज़, हम सिर्फ फॉर्मल सेविंग्स देख रहे हैं, वो सेविंग्स जो अनडॉक्यूमेंटेड नहीं देख रहे हैं। अनडॉक्यूमेंटेड नहीं देख रहे हैं। राइट। All we have to do is to channelize that saving, that informal saving into formal sector and move that savings to the area where it belongs, so that it could generate more revenues, it could generate more employment. So इस तरह की चीज़ है हमारे पास। एज अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर हम देखें, आपने सवाल आपका ये था कि कितनी तरह की प्रोडक्ट क्लासेस हैं जिसमें हम कितनी किस टारगेट मार्केट को या किस ऑडियंस को हम एंगेज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हमारे पास हर सेगमेंट के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। खवातीन जो कि जनरली सेव करती हैं और उनकी सेविंग्स जनरली शॉर्ट टर्म होती है क्योंकि वो किसी नीड की बेसिस पे होती है। सो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही रिस्क फ्री हैं। मतलब दीज प्रोडक्ट्स आर जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट, आपने बैंक में पैसे डाल दिए बट द रिटर्न्स इज मच बेटर देन बैंक अकाउंट। सो उस तरह के प्रोडक्ट्स भी हैं। फिर कुछ ऐसे लोग हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मीडियम टर्म की सेविंग्स है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास पैसे हैं जो 3-4 साल तक रहते हैं हमारे पास। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, बट रिस्क ज़्यादा होने के साथ साथ रिटर्न भी ज़्यादा होता है नेचुरली। एंड इफ यू हैव अ मोर लॉन्गर टर्म फंड्स, 5 years, 6 years, 7 years, देन वी हैव मोर रिस्कियर प्रोडक्ट्स जहाँ पे आप और ज़्यादा रिस्क लेके और ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट इज योर एपेटाइट, व्हाट इज योर होराइजन ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन, एंड ऑब्वियसली लेमैन को पता नहीं होता कि उसका क्या होराइजन है। सो माय पीपल, माय टीम एंड व्हाट वी आर डूइंग डिजिटली, हम लोगों को ये इन्वेस्टमेंट या सेविंग करने से पहले बताते हैं कि आपका होराइजन क्या है, उनकी पूरी रिस्क प्रोफाइलिंग होती है एंड देन दे डिसाइड कि व्हिच प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू चूज।
म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं और दिस इज बेसिकली डिफरेंट एक्सेप्ट अभी आप लोगों ने भी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी आप लोगों ने भी शुरू किया है। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। क्या डिफरेंस है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने में और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में? देखिए, पहले तो एक कन्फ्यूजन ये क्लियर करनी पड़ेगी, जो कि एक जनरल एक आई मीन जो द परसेप्शन व्हिच पीपल हैव अबाउट म्यूचुअल फंड इज म्यूचुअल फंड्स रिस्की होते हैं। It's not that. It's not at all that. Really? Yeah, because you have to choose wisely which mutual fund you are going to invest in. Right. So as I explained earlier, we have equity funds which are high risk, high return, but we have money market funds which are low risk, low return. It's just like your bank account. So first ये आपको ये clear करना पड़ेगा. Your second and actual question is कि what is the difference between investing in equities directly and investing in equities through mutual funds. So देखें होता क्या है, when you are going into equities directly, so you have you will always have a limited amount. You cannot buy a portfolio of 30 shares in 500,000. You cannot, even in a million, even in 2 million. So what you do, I mean, why you can't buy a portfolio of 30 shares? Because there is a market lot size in exchange trade. So you can buy minimum 500 shares of each security. So you cannot buy 30 securities, 2 million rupees. Right. But if you invest in mutual fund manager, which is who is a professional fund manager, and he looks after market very closely and changes his position very swiftly, depending on the market circumstances, depending on the economy, depending on the the health of the company in which he is investing and all that. But you as an individual, you cannot do that. You cannot you cannot track 30 companies, but he does because he has a team. And he has a team and it's a shop. Right. So he manages that 30 securities for you, and you, while investing in equity mutual fund, you are basically becoming a part of that entire portfolio. Absolutely. अच्छा, थोड़ा सा हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी फिक्स्ड इनकम है। अब मैं अजूम ये कर रही हूँ कि बिकॉज इफ आई एम अ बिलियनर, तो मैं स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्टली भी आई वुड हैव समबडी हु वुड बी लुकिंग आफ्टर ऑल ऑफ द 30 और 50 और व्हाटएवर नंबर ऑफ कंपनीज। बट देन देयर आर सर्टेन पीपल जो कि आपके मीडियोकर बैकग्राउंड्स के हैं, उनके लिए आई थिंक दिस इज मोर यूजफुल। बट देन देर आर ऑल्सो पीपल जो कि रेगुलर इनकम पर नहीं है, जिनकी एक महीने में बहुत अच्छी इनकम आ जाएगी, दूसरे महीने में थोड़ा कम लेंगे, फ्रीलांसर्स हैं, इसमें आपके प्रोजेक्ट बेस्ड जो काम करते हैं लोग वो आ जाते हैं, इवन आपके फिल्म प्रोड्यूसर्स वगैरह जितने भी हैं, ये नाउ दे मेक गुड मनी, बट दे डोंट मेक गुड मनी एवरी मंथ और एवरी ईयर। सो व्हाट काइंड ऑफ सेविंग ऑप्शंस डू दीस काइंड ऑफ पीपल हैव, जिनके पास लिक्विड कैश और इस तरह की चीजें हैं? देखें, दिस इज ट्रू फॉर एवरी बिजनेस. Only salaried class have a regular stream of income. Yeah. Other than salaried class, this is true for any kind of business, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा. Right. So generally इस तरह के लोग करते क्या हैं, when they get a good amount in a month, they usually divide his income, the cash flow in at least two categories. One is for short-term liquidity. These are the funds which he will be needing in a coming month or so for investing again into his business. Right. And he kept aside a portion of it for the long-term saving. Long-term saving means for 3 years, for 4 years, for 5 years, or for any contingency. So these are the basic things with these kind of businesses are doing. The short-term money is generally invested in money market funds, lower risk funds, so that they can generate a decent return out of it. And जो long term पैसे होते हैं उन्हें in hybrid fund, with a 50-50 equity debt and equity fund, उसमें डाल देते हैं, या अगर ज़्यादा उनका विजन होता है तो वो और आगे टोटल इक्विटी में डाल देते हैं. राइट. थोड़ा सा कोविड के ऊपर बात करते हैं. कोविड टाइम्स के अंदर बिजनेस मुश्किल हो गया होगा आप लोगों के लिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली लॉस्ट देयर जॉब्स एज वेल, अनफॉर्चुनेटली. और दूसरा ये कि ऑपरेटिंग फॉर एन इंडस्ट्री लाइक योर्स, आई थिंक ऑफिस आना, मीटिंग पीपल इज एसेंशियल. सो was there any dependency that you created, that you had, that you basically shifted to another technology, जिसके थ्रू आपने अपने बिजनेस कंटिन्यूटी को मेंटेन किया? अच्छा, we as a company, we always focus
ऑलवेज आवर फोकस हैव बीन ऑन द एजिलिटी। हम कोशिश शुरू से हमारी ये रही है कि हम अपने आप को जितना ज़्यादा आई मीन लीन कर सकें, जितना ज़्यादा रिमोट कर सकें, उतना ज़्यादा वो करें। यही रीज़न है कि जब ये जो वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट और ये सारी चीज़ें ये अक्सर जगहों पे इम्प्लीमेंट हुई कोविड के दौरान, बट वी हैव बीन डूइंग दिस एज अ कंपनी आई मीन सिंस लास्ट 4-5 years, क्योंकि नॉट एग्जैक्टली वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे थे, बट 2-3 ओकेजन्स पे हमने ये ड्रिल की कि हमारे जो डीआर एक्टिविटीज़ हैं वो हम अपनी डीआर साइट से ना करें। वी प्लान दैट एक्टिविटी आउट ऑफ होम, अच्छा। so that helped us a lot while we were shifting during COVID from work from office environment to work from home environment. And obviously, as I said earlier कि हम ये पहले से करते रहे, so we I mean we have been relying on jazz for our connectivities, जिसमें ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम वो ड्रिल्स कर रहे थे वो जैज़ ने हमको प्रोवाइड किया। What Jazz has done in the COVID environment, that is phenomenal, क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा था कि हमने ये सब तो कर लिया, but how we move our call center, क्योंकि call center मतलब I mean there are certain protocols which we have to follow to run a call center. We have a 24/7 call center and it's equivalent to any bank because we issue debit card to our customers. That debit cards are required to be, I mean, activated, required to be deactivated, Absolutely. reported loss and all that. So there is no way we can close our call center. So I mean we use Jazz solution to I mean to send those agents home, घर से काम करें, जैस की कनेक्टिविटीज़ को यूज़ करें, जैस का जो पूरा सोल्यूशन है कॉल सेंटर वर्क फ्रॉम होम का वो हमने यूज़ किया एंड दैट वाज फेबुलस। उस पीरियड में हमको जो एक हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कॉल सेंटर वो हमने फिर जैस के थ्रू सॉल्व किया। चलिए that's good to know. So थोड़ा सा आई फील लाइक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड्स, नॉट एवरीवन कैन सॉर्ट ऑफ ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी इन डेट इन्वेस्टमेंट्स, और इवन अगर इसके अलावा डिविडेंड्स वगैरह वाली जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, नोबडी कैन अंडरस्टैंड ऑफ फॉरेन से नहीं समझ में आता। जो लोग तो इस फील्ड के हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन जो लोग नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो व्हाट इनिशिएटिव्स डू यू टेक टू बेसिकली एजुकेट द पीपल, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट? सो आप एजुकेट करने के लिए लोगों को कौन से चैनल्स यूज करते हैं और किस तरीके से आप उनको समझाते हैं कि यहाँ पर आए? देखें हमने आपने बिल्कुल सही कहा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है एंड वी एज अ इंडस्ट्री आई बिलीव इट्स माय व्यू कि वी एज अ इंडस्ट्री हैव मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड बाय गिविंग सो लार्ज नेम्स टू आवर प्रोडक्ट्स। सो और ये हमारी साइकी है, ये हम ये काम मतलब अपनी प्रोडक्ट को इतना मुश्किल हम कर देते हैं कस्टमर के लिए कि वो बेचारे के लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है। Absolutely. सो हम कर क्या रहे हैं, हमने अब कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके जाएं उनके कम से कम नाम आसान रखें और लोगों को जो उनका भी एक्सपीरियंस है विद द बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, हम उनको वो एक्सपीरियंस देना शुरू करें। सो फॉर एग्जाम्पल अब से पहले ये होता था कि जब आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है, सो इट टेक्स एटलीस्ट बहुत एफिशिएंटली काम किया अगर फंड मैनेजर ने, तो एटलीस्ट 24 आवर्स टू क्रेडिट योर इन्वेस्टमेंट इनटू योर अकाउंट, एटलीस्ट 24 आवर्स। Absolutely. In case of MCB Arif Habib, it's real time. When you transfer your funds, अगले ही लम्हे आपके अकाउंट में आपको पैसे नजर आ जाते हैं, जस्ट लाइक योर IBFT, IBFT टाइप थिंग। सो हम उसको और उस लेवल पे ले जाने की नीड ही ऐसे ही अराजी जो आप बात कर रही हैं, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। आज के डिजिटल वर्ल्ड में आप किसी से पैसे ले लें और उसको कहें कि 24 घंटे बाद तुम्हारे अकाउंट में नजर आएंगे एंड योर एंटायर बिजनेस, आई मीन योर एंटायर डिजिटल, योर एंटायर business strategy is hinging on digital. How can you do that? You can't. So that is the नहीं reason. रहेगा customers का आपके साथ। Exactly. So that is the reason कि हमने फिर ये सब चीजें करके so कोशिश कर रहे हैं आसान करने की उसको। Thank you so much, Saqib sir, for coming Thank over you very here much. today and Thank you. engaging in conversation, quite an interesting and informative conversation. So thank you so much. We will be back with another episode of Jazz Biz Buzz soon, so stay tuned. Jazz Business, designed to help you grow.